It's time to invite on stage the Starcast. We'll start with this man जिन्होंने हिंदी फिल्म में कदम रखा और the ball was out of the park. इनको बड़ा सारा प्यार मिला. The man, he knows what he's doing on that big पर्दा, you know. अब तेलुगु डेब्यू कर रहे हैं इस पैन इंडिया फिल्म के साथ. मैं कहूँगा ऋषभ साहनी, ladies and gentlemen, give it up for him. हैंडसमता की मिसाल देखिए आप यहाँ पे. ये अलग ऋषभ, अलग प्यार कर लो, आप ही कर लो यार. Thank you so much, guys. Thank you. अरे क्या करके मानोगे ऋषभ, दिस इज फैंटाबुलस. एंड जो बड़े पर्दे पे देखा वो तो और भी माइंड ब्लोइंग है. यू नो, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट स्केल. हमने शुरू में बात की थी कि वी ऑल आर ब्लेस्ड. टॉक टू अस अबाउट इट, बिकॉज एंटागनिस्ट टाइप कुछ दिख रहे हो, लेकिन फिर भी वो क्या क्या माहौल था? Bro, honestly, Abhishek sir is not here today, but it was entirely his vision. You know, this character is very dark, and I'm doing a double role, and both my characters are dark. You can call it dark and darker. And Abhishek sir gave me the freedom to go to the darkest ends. He was so descriptive and vivid, and you know, he explained the character very well, and the way he designed the looks, the way he designed the shots and everything, it gave me a lot of freedom to play the character. Because it's not easy to play such a bad guy. Yeah. And I really have to talk about two things, bro. Ashok sir, who's the art director of the film, he made such beautiful sets. I mean, there was a set where there were the 10 avatars of Vishnu ji. Wow. And every time we were shooting, the first thing I would do when I went to the set was go in the middle, stand there, pray for 2 minutes. That used to give me so much, you know, it used to make me feel so centered. That is one. And the other person I want to talk about is the editor of our film, Pranav. He has done a fantastic job with the edit. And Sondar sir, I mean, the way he was framing each and every shot, you just look into the camera and you could know that something crazy is going to come out of it. Special mention for our producers, bro. The way they have supported the film, I mean, they used to be there on set for all the night shoots, for all the day shoots. Be it they are well, they are feeling unwell, they are feeling well, they were there. And even Ira is also there on set for a long time, bro. And overall, like I'm just thankful, I'm grateful for the opportunity, getting a Telugu debut with this film. I mean, I think God is really kind with me, because I got my debut with Fighter and then my Telugu debut with Nagabandham. And I'm just grateful. Thank you, Vasu sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Swandar sir. And thank you, Abhishek sir, for the opportunity. Thank you so much. यार, डार्क किरदार प्ले करने पे इतना प्यार मिलता है तो सब वही करना चाहेंगे भाई. बैडमैन को मिल रहा है सबसे ज्यादा प्यार यहाँ पे. Thank you so much for sharing that. Ladies and gentlemen, now it's time to invite on stage someone who's supremely talented and gorgeous. हाँ जी, आओ आप आ जाओ, कम आ जाओ, आप आ जाओ. ये नहीं करने देने वाले मेरे को. Okay, so अब जिनका Rishabh for sure is extremely talented, but the most gorgeous is our heroine Nabha Natesh. Absolutely, she said it. अभी वही चलने वाला है यहाँ पे. You know, she's conquered all the industries. कई सारी फिल्में, मैं किसी एक फिल्म का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, because every single time you've seen her, you're like, wow, she's just gorgeous and so talented. Nabha Natesh, give it up for her, ladies and gentlemen. Please मंच पर आइए. There she comes. अच्छा, यहाँ सीटियां हैं. वाह, वेरी गुड. बढ़िया खेल रहे हो तुम लोग. हाँ, Nabha, welcome. Thank you so much for being a part of this. It's so good to see you again. कुछ दिन पहले she was here, तो हमने वो माहौल देखा था. Everybody was a fan. You know, we all were so much, you know, in love with her. अभी वापस से thank you so much for being a part of this. Please मुझे बताइए आपके लिए. Thank you so much. आपके लिए how was the process, the entire thing, because this is huge. Hi Mumbai, कैसे हो? ट्रेलर अच्छा लगा? इतना सारा प्यार. Thank you so much. I mean, the kind of energy you guys have given us for the trailer is amazing, and it's
filled us with confidence. We were all sitting and the kind of, hooting and whistles. Thank you, thank you, thank you so much. What do I say? What do you want me to say? This movie the journey has been beautiful. Nagabandham is not just any film. It's our Sanatana Dharma and historical events wrapped in like a beautiful drama and presented at a large scale visual spectacle. आपने trailer तो देखा होगा, but asli picture on July 3rd. Please do come to the theaters and give us the same energy. What more can I say? And I have thanked all of our team yesterday in very length, but I just really want to thank Sound Sir, Rishabh, our producers, our incredibly talented director, our hero Virat. Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity, Nishita and Kishore. I want to see the movie as much as the audience have been waiting because you're all in for a surprise, including myself. She said it. She said it. Yeah. Thank you so much for sharing that. Thank you so much. Okay, now, ladies and gentlemen, विष्णु भगवान की फैबुलस आप लोग याद रखोगे. Give it up for हमारे hero Virat Karna, ladies and gentlemen. There he comes. Go Virat. कार्तिक पौर्णमी के दिन हमारा टीजर लॉन्च हुआ था. तब से एपीटीएस में सब लोग इनको शिवजी मान रहे हैं. जैसा मैंने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी ब्लेसिंग्स हैं, सब कुछ यहाँ पे है. एंड आपका वो जो अवतार देखने को मिला, पहले कुछ दिख रहा है एंड देन सडनली वो ट्रांसफॉर्मेशन. टॉक टू अस अबाउट दैट. एंड आमची मुंबई मध्ये आपका स्वागत है. ऑफ कोर्स. थैंक यू सो मच. हेलो मुंबई. मैं पहले बार इधर आ गया एंड मेरा हिंदी थोड़ा इधर उधर होता है. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. So, I would like to thank my director Abhishek Nama for giving me this beautiful opportunity. क्योंकि second movie को इतना बड़ा movie आने के लिए it's not easy, and he had seen something in me. So I would like to thank him and my producers Nishita Garu and Kishore Garu for trusting me and giving me this huge project. And Naba Natesh, thank you so much for supporting me, and she is very active in the shoot also. She used to give lot of energy. And Rishabh, thank you so much. And DOP sir, thank you so much sir. Your visuals are like crazy. And I would like to say only one thing about this movie. It's not a movie. I'm not inviting you to watch it just as a movie. I'm inviting you to experience the journey that celebrates our Indian culture and courage. Wow. क्योंकि हमारा मिट्टी का स्टोरी है ये, एंड वी डोंट नो आवर क्या बोलते हैं आवर नेक्स्ट जनरेशंस को. वी हैव टू शो आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर. सो दिस मूवी इज़ गोना शो एवरीथिंग. हमारा इंडियन का पावर क्या है और हमारा सनातन धर्मम का क्या है, एंड एवरीथिंग इट विल शो. एंड द स्टोरी रन्स अबाउट विष्णु, शिवा एंड नागसाधु. सो यू लिंक इट इन द लिंक पूरा आपको मूवी देखने के बाद मिलता है. तो थैंक यू सो मच. एंड CEO वासु गारू, थैंक यू सो मच सर. एंड गणेश आचार्य मास्टर, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच फॉर बिकॉज फॉर द सेकेंड मूवी इतना बड़ा कोरियोग्राफर से डांस कोरियोग्राफी करना, इट्स नॉट ईजी. एंड आई वुड लाइक टू थैंक गणेश सर. एंड Thank you sir. Thank you so much. Thank you. Oh. And we started Ananta Padmanabha Swami Radha Yatra in AP and Telangana. वो उसको बहुत अच्छा response आ रहा है, and we'll start this in Mumbai and North India also. I think that North, South, East, West पूरा सब हमारा मिट्टी है, एंड उसमें हमारा माइथोलॉजी एंड हमारा स्टोरी पूरा सबका एक ही रहता है. तो ये मूवी भी ऐसा है. सो सब लोग ये मूवी देख के जुलाई 3rd ना एक सरप्राइज फील होता है, एंड दिस मूवी इज गोना सरप्राइज यू ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, लेकिन उससे पहले विराट भाई, यू टॉक्ड अबाउट एवरीवन, बट यू हैव टू टॉक टू अस अबाउट दिस कैरेक्टर ऑफ योर्स. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या किया है कैरेक्टर ने, क्यों अलग है ये वो, ये नहीं पूछ रहा हूँ. मुझे बताइए खुद को कितना चैलेंजिंग महसूस हुआ ये प्ले करते हुए, बिकॉज दिस इज नॉट इजी. Yeah, this is not easy because, I mean, as a newcomer for me, playing this much variation from my first movie to second movie and playing Nagasadu character, it's not easy. And I think that हमारा पूरा unit का पीछे ये power है, that power is supporting us. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां. We have some very important people. I'll be inviting them on stage. लेकिन उससे पहले we'll take your questions. और उससे भी पहले मेरे पास एक सरप्राइज है आप सबके लिए. मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, सर आप आइए, विराट भाई यहाँ, नभा जी आपका मैं माइक ले लेता हूं और आपको आगे आने को बोलूंगा. या बिकॉज वो एक हुक स्टेप है, वो तो करके बताना पड़ेगा. जो नमोरे सॉन्ग है ना, दैट इज समथिंग दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंड हाउ, वो तो हम चाहते हैं प्लीज थोड़ा सा हम सब के लिए बनता है ना. कैन वी मेक सम नॉइज फॉर, या ऑफ कोर्स. Supporting our movie. Thank you so much. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां of course for the gorgeous lady and this entire team. Thank you so much for being so kind, of course. Okay, we'll do a quick picture with this team, है ना? And then we'll take the questions. And फिर कुछ और लोग हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगा in some time, yeah? मैडम, अभी मेरी एक कलीग ने भी एक एग्जाम्पल दिया है. बाहुबली जो फिल्म है हमारी कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा की एक वन ऑफ द लैंडमार्क मूवी बन चुकी है. साउथ की जब भी फिल्में आती हैं तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड वाले डर जा रहे हैं, ये कह सकता हूं मैं. ये जो आपकी फिल्म है, इसकी जो जर्नी की शुरुआत हुई किस तरह से हुई? क्या आपने पहले से ये तय करके रखा था कि बाहुबली से भी हमें बड़ी फिल्म बनानी है? वी आर नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री. दिस इज़ आवर फर्स्ट फिल्म निक स्टूडियोज़ का. पहले हम सॉफ्टवेयर बिजनेस कर रहे थे, उसके बाद बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहते थे और ये फिल्म की अपॉर्चुनिटी मिली हमको. एंड जब अभिषेक नामा सर से मिले थे, उनका प्री प्रोडक्शन वर्क इतना स्ट्रांग था, उनका विजन पूरा समझ में आ गया हमको. तो उसके हिसाब से हमको लगा ये फिल्म बहुत बड़ा हिट बन जाएगा. एंड आई एम ऑल्सो ए बिग डिवोटी ऑफ शिव जी, so I like the subject and we wanted to do it more. Kishore, you want to expand more on this? Yeah, so again, I'll talk in English. Yeah, so when we started, I think the budget was not this high. I mean, so we started it, the output started coming well. We started seeing very good reception from the, people who have seen the rush, people who have visited the sets. The artists were also doing very well. Everybody was giving in their, day in, day out only for the movie. So if you talk about Abhishek, Virat, so most of the, I mean, the good amount of team is also a first timers and they're giving their heart and soul for the project. So seeing that dedication, I think you get that kind of confidence that this project will be a huge success. So that is the gut feel that we have gotten when we started early. And as we started seeing the output, as we started getting more and more confidence, we started investing. And while we are doing that investment, we are also cognizant of what is the risk that we're taking, how to de-risk it, and will it be a profitable venture or not. So all these have been considered and then only we have invested. So you can call it a calculated risk. आपने कैलकुलेटेड रिस्क की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की. अगर मैं पूछना चाहूँ, क्या इन्वेस्टमेंट किया है इस फिल्म के लेकर और क्या प्लानिंग है रिटर्न्स को लेकर? कहाँ वर्ल्ड वाइड किस तरह से प्लानिंग है? क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको लगता है कि ये फिल्म बाहुबली के रिकॉर्ड सारे तोड़ पाएगी? क्योंकि विजुअली तो बहुत इफेक्टिव लग रही है फिल्म. So the investment is at around 110 crores plus has been the investment. As far as will it cross Bahubali or not, I think you guys, your response has actually been the proof of whether it will cross Bahubali or not. So I'll leave it at that. So let's wait for July 3rd and then see how it goes.
माय फ्रेंड्स कीप टेलिंग मी पूरा इंस्टाग्राम पूरा नागाबंधम ही चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो? सो दैट इटसेल्फ इज द दैट शोज द मूवी इज गोइंग टू बी अ बिग ब्लॉकबस्टर. I think we have somewhere created that interest in the audience, that this is a film to look out for. The film has stands out, and then there is great content that that will surprise you. So I think those three things are actually enough to pull the audience into the theaters. And then let's see how it goes. And talking about the business, we've partnered with some of the greatest, like we have Z Studios on board for distributing in North and overseas. I think that gives us a strong strength. I think we have closed 80% of the business, so I think we're out of risk in that sense. Sir, my question is to Virat, sir. Yeah. Hi, sir. First of all, congratulations to you. All the best for this film. Thank you so much, sir. You got a very good opportunity to act in this big film. It will be a pan-India film. So what is your feeling with this particular? You joined with this film. Actually, you can say it's a debut to this thing. So what is your feelings? Just express your feelings. मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, दिस इज़ द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी. सो ये मूवी के लिए पूरा मेरा जान लगा के काम किया, क्योंकि आपका दिल में छोटी से जगह चाहिए. सो या एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट. सर आपने नहीं सुन रहे तो सॉरी. या